Welcome, everybody. A very warm welcome to the Rapid Fire Monday. This is your host, your host, your catalyst for the day, Nitika, holding the quiz master mantle for today. And the topic for today is very interesting, one of the very pioneer topics of organic chemistry, which is isomerism. And to play this beautiful, amazing rapid fire Monday game, we have three amazing participants with us. Without any further delay, let me introduce them. And till the time they are coming on screen, please let me know in the chat whether I'm audible and visible very quickly. Let's have them on the screen. All right, superb. So I think I'm audible and visible. Okay, with that, I have got a good to go. We have Kanan, we have Dharam, and we have Pavandeep. We have Kanan, who is a repeater in the Rapid Fire Monday. I think that has never happened before. I remember evidently she's the one who wants to do charity as a New Year resolution. So I've not forgotten that. So Kanan, Dharam, Pavandeep, I would like to know from you guys, where are you from? Okay, and what are your hobbies? And I think all three of you are in class 11. So yeah, we know your classes. You can tell me your city and your hobbies. We'll start with the lady, Kanan. Hello everyone, I'm from Delhi and my hobby are drawing and dancing. Super. What kind of dance, Kanan? All folk dances. Oh, lovely, lovely. Okay, so intense looking Dharam, huh? Dharam Paji. How are you today? And let So, us know which I'm city you're fine. in. I'm from Delhi, and my hobbies are listening to music, Listening to music. What kind of music you like, huh, Dharam? any kind. I don't mind. Any kind. Superb. So let's play Jagjit Singh today. No, I don't know who that is. Okay. So exceptions coming to any kind of music, huh? Okay, we have Pavandeep. Pavandeep, quickly introduce yourself. Where are you from? What are your hobbies? Good evening, everyone. I'm from Delhi. My hobbies are playing football and reading books in my free time. Super. What is the latest book that you've read? Don't tell me NCRT. They are basically novels or news articles, something like that. Superb, superb. All right. So we have three Delhiites today. I'm from Delhi also, but right now I'm in Bangalore. But yeah, I am a pure Delhiite from the heart. Well, so I welcome all three of you. You know the rules, guys. Everybody in the chat, please make sure you are also very participative. I'm going to be very quick in narrating the rules. Number one, of course, you have to be very quick. It's a rapid fire. So you have to rapidly fire the answers. The questions are handpicked by us in such a way that can be rapidly fired. Maximum time in the rarest of rare case that you can take is 2 minutes. Whosoever will give the fastest answer, guys, you will get a +4. The second one would get a +3, and the third one would get a +2 in case you're right. But in case if you're wrong, you will get a -1, no matter you give fastest or slowest. If it's wrong, -1. And we also give you this chance to not answer. So you can skip the question, right? We'll write an N there in case you skip the question, which means null. You do not answer that and you get a 0 for that. No negative marking. All right. So these are the simple rules. Get set, go. Everybody. We are familiar with rapid fire, ma'am. Tarun Kumar is saying your classes is our training. So yes, I keep taking rapid fire. So here is the rapid fire now coming across you guys. So all the very best. Maintain your momentum. Hashtag speed with accuracy. And maintain your calm. Maintain your composure. And let's see, the best man wins. Let's start with the first question. Name the isomerism shown by the following compounds. You can see two compounds in front of you. Your options are chain isomerism, option B, positional isomerism, option C, functional isomerism, or is it option D, both A and B?
bouncer in the very start, let me tell you. So I have many answers coming in the chat from the audience also. Unlike you guys, there is Popula Harshit Sai saying D. Ajay is saying B, just like Pavandeep and Kanan. Aditya Parv Jain Nilwani is saying D. Only Dharam is saying A. हाँ धर्म, ऐसा मैम क्यों? एक्सीडेंट हो गया, सॉरी. एक्सीडेंट हो गया, वाह. You know, let me tell you, accident में बहुत सही काम हुआ है. Is indeed the right answer. तो change कर दे क्या आंसर धर्म? मैम ये सही है. A is indeed the right answer. Let me tell you, CN जो है, carbon is present in this functional group cyno, right? So you have to include it as a part of the parent chain. And if you include it as a part of parent chain, look at the first compound, you have 4 carbons in the parent chain. Whereas the second one, by no means you can take all the 3 carbons as well as CN in one chain, right? तो क्या हो जाएगा? दूसरे वाले कंपाउंड को अगर आप देखेंगे तो वो 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल है. CN है, CN का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, चेन ही चेंज हो जा रहा है. एक में 4 कार्बन है पेरेंट चेन में बिकॉज इट्स ब्यूटेन नाइट्राइल, और दूसरे वाले में इट लुक्स लाइक पोजिशनल आइसोमेरिज्म. दिस इज अ क्लासी केस, और जो भी मुझसे पढ़े हैं वी हैव टेकन इट इन क्लास आल्सो. सो यहाँ पे तुक्के से सही तो हो गया है, बट यस, नाउ आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि क्यों ये चेन आइसोमेरिज्म में चेन्स आर डिफरेंट. एक में 4 कार्बन की कार्बन स्केलेटन है, और दूसरे में ऐसा नहीं है कि CN का पोजीशन बस फर्स्ट से 2 कर दिया. फर्स्ट से 2 करते ही पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, पूरा का पूरा कार्बन स्केलेटन ही चेंज हो जा रहा है. So I'll show you the solution once again. Let's have the solution slide. So please look at the IUPAC nomenclature: butane nitrile and 2-methyl propane nitrile. That means we have different carbon skeleton altogether. And if we have the carbon skeletons which are different, which means it becomes a chain isomerism. So Kanan and Pavandeep, looks like you were very correct. यही मैं expect कर भी रही थी. That's why it's a rapid fire. मैं expect कर रही थी सब भी बोलेंगे, but yes, the answer was indeed chain isomerism. So audience में भी हाँ, very well played everybody. किसी ने सही आंसर नहीं दिया. Very well played. Superb. ये होता है start. Let's have the scoreboard. धर्म पाजी, एक्सीडेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करें. So I can see a great start here coming up. And Kanan and Pavandeep, Kanan, you are familiar. Anything can happen. This time I'm sure you've come to win again, huh? But yes, we'll see. The scoreboard is just the start. आप end तक देखिएगा कैसे ये बदलता है. मैं 100% sure हूँ ये बदलेगा. चलें आगे. Dharam, Pavandeep, ready for the next one? अरे हाँ या ना तो करो, कैसे पता चलेगा मुझे? Yes, A ma'am. nod or a thumbs up? Okay, cool. So question number 2, guys, on your screens now. Tautomerism will be exhibited by option A, you have RCH2NO2. In option B, we have CH32NH. In option number C, we have CH3 thri-CNO. And in option number D, we have R3CNO2. So nitro in A as well as D. So your friends are giving all different answers here as well. Ankit Kumar is saying C. Tautomerism, आपको बताना है कौन एग्जिबिट करता है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजी है. हर्षित साई is saying A. Nakul is saying D. Jakpal is saying A. Dharam has also said A. सभी बच्चा पार्टी जो भी ऑडियंस में है, चैट में है, प्लीज इंश्योर यू ऑल्सो. We have 15 questions today lined up. Out of 15, how many are giving correct
Please figure that out and give it to me how many out of 15 you will be giving right by the time our participants are giving the answer. So all three of you are going with A. Dharam ne start kiya tha A. Pavandeep also went with A, and Kanan also went with A. So indeed, all three of you are absolutely right this time. RCH2NO2. देखो A में भी NO2 है और D में भी NO2 है, but what makes A different from D is of course this, that in A we have alpha hydrogen. Of course B में तो option है ही नहीं, NH है, we have a 2-degree amine, and C में nitroso group है NO, that also doesn't show the tautomerism, the kind of isomerism which is tautomerism, which is very different, right? So yes, A, let me show you the tautomer of A very quickly. Let's see. Look at the solution. This is the tautomer, nitro. One is nitro, the other one is called Se, ACI, right? Se nitro. So the hydrogen, which is at alpha position, you can see the H plus migrating, and you can see it's also kind of enol tautomerism which is happening. So wonderful answer by all three of you. Well done, well played. A and D में confusion था. Nakul is saying now there shouldn't be any more confusion. है ना? तो like you know, this is a learning experience that we are having. तो ये learning experience है. जो भी गलत हो रहा है उसको correct करते हुए चलते रहो. जो सही हो रहा है उसमें celebrate करते हुए चलते रहो. With this, let's see the third question on your screen now. In the Newman projection for 2,2-dimethylbutane, X and Y can respectively be. Very simple question, very basic. Options are H and H, option B, H and C2H5, option C, CH3 and H, option D, none of these. अरे यार 2,2-डाइमिथाइल मुझे कार्बन काउंट करके बताएंगे कितने हैं इस 2,2-डाइमिथाइल में? Please unmute and tell me. In 2,2-dimethyl-butane, how many carbons do you have? Butane, 2,2-dimethyl, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है भाई? Oh, the answer should be B. Answer should be D. B. B, yes, of course. क्यों? कितने कार्बन निकले कनन? Ma'am, 6. 6 है ना, तो 4 तो प्रेजेंट है. HH लगा दोगे तो 4 कार्बन में खत्म. ब्यूटेन थोड़ा बनाना है हमें 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाना है. 6 कार्बन होने चाहिए. एक बड़ा गोला, एक छोटा गोला, ये जो बीच का डॉट है, और एक बड़ा गोला, 2 तो ये कार्बन हो गए. CH3 और CH3 2 ये कार्बन हो गए. 4 कार्बन तो प्रेजेंट थे ही, 2 कार्बन और चाहिए ना. सोचना भी नहीं था, ए ऑप्शन में पॉसिबल नहीं था, सी में 5 हो जाते. वी वांट 6, which is only possible जो कनन ने कहा with option B, right? So all 3 of you are wrong this time. The correct answer is indeed B, which was given by Dibakar, Jakpal Singh, Aditya. So you guys now understand ना क्या गलती हुई, है ना? तो कार्बन गिनने थे भाई लोग, और कुछ करना ही नहीं था. Let's see the answer once again. Let's see the solution slide once again. 2,2-dimethylbutane. बस कार्बन काउंट करना था. आंसर आपके सामने था. गेम था बस #speed with accuracy का, और कुछ था नहीं इसमें. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था. Let's see the scoreboard, how it looks like, and then we'll see. Okay, तो कनन ने अपना अकाउंट खोला और दोबारा फिर 0 पे. So Kanan, anything can happen in rapid fire Monday. So you know that. So I know you will #bounce back. Pavandeep is on 1. Pavandeep, tension not. Chill होकर एकदम बढ़िया देते रहो answer without taking any kind of pressure. And Dharam Paji, आप तो यार accident के साथ भी बढ़िया सही answers दे रहे हैं. So I'm sure that you will keep the momentum up. So Dharam is on 7, leading the scoreboard right now. Let's see with the next question what happens. Question number 4.
What is minimum number of carbon atoms required for alkanes to exhibit chain isomerism? A very basic question. Option A 1. Is it option B 2? Is it option C 3? Or is it option D 4? Bang on. अगर आपने 3 दिया होता तो हो जाता ना आंसर. सी ऐसे अगर 3 कार्बन बनाते और एक कार्बन दूसरे के. अच्छा कनन के नो एब्सोल्युटली. सो 3 बोलते तो बिल्कुल गलत होता. द राइट आंसर इज इंडीड ऑप्शन डी 4, of course, because you know what 2 isomers are possible if we have 4 number of carbons. I'll show you very quickly. Look at this. We have 4 carbons like present in butane, and we can have the other possibility of 2-methyl propane, right? So this is the possibility. This is the parent chain being changed. That's why they're chain isomers, which is possible only when we have least number of carbons, which is 4. इससे कम carbons हो तो काम नहीं चलेगा boss. तो बहुत सारे बच्चे ऑडियंस में भी बिल्कुल सही दे रहे थे. जानवी said D, Jagpal Singh was saying D, Aditya Saxena was saying D, Shubham Rajput said D, Ranjan also said D. Many of you, great going, superb. ठीक है? So you guys are absolutely rocking so far. So be very ready for the next one. Very simple question coming up in front of you now. So question number 5. On your screens. Consider the following compounds. The number of enolizable hydrogen atoms is. Is it 10? Is it 8? Is it 5? Or is it 4? Let's see. सही यूनियन है इस बारी तीनों के बीच में. कनन भी ए कह रही है, धर्म भी ए कह रहे हैं, पवनदीप भी ए कह रहे हैं. मतलब गेम हो चुका है स्पीड विद एक्यूरेसी का. बिल्कुल सही अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करने थे, जो कि आप तीनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से काउंट करे हैं. कोई गलती नहीं है इस बारी काउंटिंग करने में. 10 को 10 ही गिना है, ये बहुत अच्छी बात है. So 10 is indeed absolutely right. Let's see the alpha hydrogens by maximizing the structure. These are the 10 alpha hydrogens which are present, which are any of them can enolize, right? हमको क्या पता कौन सा enolize होगा. We can tell the maximum one, but आपको जब इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, आपको सारे count करने all the alpha hydrogens, right? So indeed 10 is absolutely right. Let's see how is the scoreboard looking right now. Dharam is leading it with 11. Kanan is now on 8. Pavandeep is now on 7. Wonderful, wonderful. Let's see whether Dharam will be able to maintain the lead with the next question. Let's have the next question on your screens. Which of the following functional group cannot show metamerism? Okay. Options are option number A, OH. Option B, S. Option C, NH. Or is it option D, O? धर्म भाई क्या सोच के बी किया? गलत पढ़ गया था. पर इस बारी गलती से सही नहीं होने वाला है, क्योंकि yes indeed A is absolutely right, which Kanan and Pavandeep has said. A, OH, जैसे रावण है ना, रावण के 10 सर हैं, कभी बीच में दिखाते हैं उसका मुंह, 4 यहाँ पे, हाँ, और 5 यहाँ पे, इस तरीके से सोच सकते हो, 3 यहाँ पे और 7 यहाँ पे. तो विद रिस्पेक्ट टू द मेन फेस चेंज होता रहता है ना? तो वैसा ही कुछ मेटामेरिज्म में रिक्वायरमेंट है. बीच का स्केलेटन चेंज होना चाहिए, साइड की जो चेन्स है वो डिफरेंट होनी चाहिए, विच इज ओनली पॉसिबल अगर हमारे पास कुछ डाइवेलेंट ग्रुप है, जैसे कि सल्फर के लेफ्ट में कोई दूसरी चेन है और राइट में कुछ और है. अगर यही SH लिखा होता तो गेम वाज ओवर. तब SH कुड नॉट बी द आंसर, जस्ट लाइक OH कैन नॉट बी द आंसर, राइट?
anyhow NH because it's having covalency of 3, तो दोनों possible है कि side chains different हो. Similarly ether के अंदर जब O है तो भी आपके metamer possible है. So A is indeed right. Let's see the solution slide once again. Check it out. Of course, you can read it. बात हमने कर ली है. Different side groups are required on left and right, which could be possible if it's oxy, if it is sulfur in between, or if it is NH in between. So many of the students in the chat were also saying A. Aditya Saxena was saying A. Attitude was saying A. Jagpal Singh was saying A. ठीक है, तो स्वास्तिका कह रही है बाजी पलट गई है. देखते हैं कितनी बाजी पलटी है स्कोर बोर्ड के साथ. लेट्स सी द स्कोर बोर्ड. तो बाजी पलट चुकी है, ये तो दिख रहा है हमें. Kanan is on 12 now and Dharam and Pavandeep are on a tie. देखो tie पे तो हमने कभी एंड किया नहीं है. आपको पता है one who wins will get goodies and awards and recognition and all sorts of bouncy and bounty things. But yes, participation I always say is the biggest achievement and is the biggest experience, right? Which all three of you are experiencing. So I'm very glad to see the scoreboard. Let's see how it differs with the next question. Next question on your screens now. Which among the given molecules can exhibit tautomerism? So options are A, only 1, B, only 2, C, only 3, or D, all of these can exhibit tautomerism. Done. सभी डी. हर्षित यहाँ पे डी कह रहे हैं चैट में. जगपाल सिंह भी डी कह रहे हैं. मेलोडियस ट्यूटोरियल्स भी डी कह रहे हैं. तो नाम इतने मेलोडियस होते हैं आप लोगों के. और बहुत सारे लोग डी कह रहे हैं यार. मुझे पवनदीप आप बताएंगे डी क्यों कह रहे हो आप? I guess mistake कर दी. ब्रिज है, कार्बन एटम्स काउंट नहीं होते. क्या काउंट नहीं होते? ब्रिज हेड कार्बन जो होते हैं. यस, क्या बात है पवनदीप. आंसर आपने बोल दिया है. ब्रिज हेड कार्बन की जगह हम अगर ऐसा बोले ब्रिज हेड हाइड्रोजन काउंट नहीं होते, क्योंकि ब्रिज हेड पे भाई डबल बॉन्ड लगाना बहुत डिफिकल्ट है. आप पहले ही समझिए कि वो एक बहुत ही फ्रेजाइल सा कार्बन है. वहां पे ब्रिज बना हुआ है, मतलब टूटा हुआ ब्रिज है. वो ऐसा ब्रिज है कि अगर स्कूटी भी जाएगी तो गिर जाएगा. आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं अपनी लैंड रोवर लेकर वहां पे जाऊंगा. तो वो जो डबल बॉन्ड है वो लगाना पॉसिबल नहीं है बॉस यहाँ पे इस ब्रिज हेड पोजिशन पे. ये कौन कहता है? ये ब्रेड्स रूल कहता है. ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ब्रेड्स रूल कहते हैं. ब्रेड्स रूल ये कहता है कि अगर ब्रिज हेड कार्बन है उस पे प्लस लगाना कतई मना है. प्लस is highly unstable because that would make that particular carbon sp2 hybridized. That means trigonal planar. That means you're trying to put the three carbons in the same plane. Already that was such, very, very tough position. And that too, you're making it sp2 planar. Planar bana rahe hain. So that is very tough. That's very unstable. Life is all about stability. And we are, of course, playing around with stability. So only 3 could show. That means C is the right answer. Neither first nor second, because what Pavandeep has beautifully mentioned कि bridgehead carbon के hydrogen को आपको calculate नहीं करना था, नहीं देखना था. वहां पे sp2 अगर double bond आएगा तो sp2 बनेगा, which is highly not stable. So all of you in the chat also were absolutely wrong. Brett's rule लगाना था. Due to Brett's rule, sp2 is not allowed for bridgehead carbon, जैसे कि योकेश कह रहे हैं in the chat, which is absolutely something that you cannot forget from now onwards. Let's see the answer once again, guys. Please check. Alpha hydrogen at bridgehead carbon never participate in tautomerism because according to Brett's rule, the bridge carbon atom can never be sp2 hybridized
Thus, only third one could show tautomerism. Brett's rule नहीं भूलना है आज के बाद. ठीक है? So let's see the scoreboard very quickly before we move to the next one. So Kanan is still maintaining the lead with 11. Dharam and Pavandeep are on a tie, 9 and a 9. And you know, this is rapid fire and anything changes. You guys are very close. So I know that the score will change like that. With this, take a deep breath, guys. And let's see the next one. Find the degree of unsaturation of the following. What you have is a cubane, you can see. A beautiful intermingling of math with chemistry. Options are A, 6, B, 5, C, 8, D, 4. अरे यार कैसे बताया ये? तो मुझे लगा कि it will be a bounce question. कैसे बताया ये? 5 कैसे निकाला? C8H8 फॉर्मूला होता है. हाँ तो मैम उससे ही निकाला डायरेक्ट. फॉर्मूला यूज किया क्या अनसैचुरेशन फाइंड करने का? यस मैम. तो क्या फॉर्मूला है पवनदीप? C+1 minus H plus X minus N by 2 in bracket. तो सुन लो भाई, जिसने भी सिर्फ फेसेस काउंट करके 6 बोला है मुझे, ठीक है, वो सब देख लीजिए. आंसर ए नहीं हो सकता. बहुत सारे बच्चों ने ए भी बोला है. हर्षिता said A in the chat. Sorry, Harshit Sai said A. Janisha said A. So what Pavandeep has beautifully mentioned, you have to find it via DOU, degree of unsaturation. You can simply count the number of carbons, add +1, and subtract the number of hydrogens by 2. There are no halogens, no nitrogens, no oxygens. So take a chill pill. So the right answer would not be equal to the number of faces, but it will be equal to number of faces minus 1. So 6 minus 1, that is 5. B is indeed absolutely right. All three of you are rock and rolling. Let me show you this formula once again for all of you who have just directly seen the faces and given me the answers. So guys, number of carbon atoms minus number of hydrogens by 2. So we had how many carbon atoms here? 8. We have number of hydrogen atoms. How many? We had, of course, 8 hydrogens only. So 8 by 2, that means 4. So 8 minus 4, that means 4 plus 1 will be the DOU. So cubane बहुत ही classic structure है. आपको इसका DOU रट भी जाना चाहिए. एक बार ही आप कर लेते हो ये वाला question solve. So you need not to find the answer once again. It stays with you forever, right? So yes, indeed, 5 was absolutely right. All three of you were absolutely right. All of you are doing an amazing job. Let's see the scoreboard very quickly and then we'll go to the next one. Okay, that's interesting. Pavandeep and Kanan are now on a tie. Dharam Paji is on 12 now. That's amazing. Let's see how the scoreboard further changes with further questions. Maintain hashtag speed with accuracy, guys. The game is very interesting. You can see it's very close and it's going to be very interesting. I'm very sure. Pressure end तक बना रहना चाहिए, है ना? जैसा इंडियन टीम खेल रही है, उससे इंटरेस्टिंग ही आप लोग खेल रहे हैं इस रैपिड फायर के अंदर, I'm sure. So with that, let's see the next question on your screens now. Which of the following are functional isomers of methyl ethanoate? Please make a right structure of methyl ethanoate, and then answer, okay? Option A, only 1. Option B, 1 and 2 only. Option C, 2 and 3 only. And option D, all of these. जब तक आप लोग आंसर बता रहे हैं, मुझसे आरिस खान पूछ रहे हैं how to enter in rapid fire. Aris Khan, we roll out registration forms on Friday. Please fill that and we'll certainly call you. ठीक है? Okay, I can see lots of students saying A also. Harshit is saying A. Ashok is saying C. भाई इन लोगों के साथ मत जाना. Neenawat Ganesh is saying B. सारे आंसर्स दे दिए इन्होंने.
वेरी नाइस। ठीक है, सो चौरसिया साहब, नकुल चौरसिया, मैंने अभी बताया, लाइक आई सेड, फ्राइडे को भाई निकलते हैं, रोल आउट करते हैं हम फॉर्म्स, आप भरिए एंड बी अ पार्ट ऑफ रैपिड फायर मंडे। हो गए तीनों के आंसर, कनन बी, धर्म बी, पवनदीप क्या वो ये बी क्यों, मुझे ये बताओ, मेरे को ये बताइए थर्ड में क्या कमी है यार? हाइड्रोजन एक ज्यादा है। एक ज्यादा है, दोबारा गिनो भाई। बताओ बताओ धर्मबाजी, मिथाइल इथेनोएट का स्ट्रक्चर जरा मुझे मदद करोगे बनाने में? हेलो, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अरे हेल्प तो करो थोड़ी सी भाई, मुझे चाहिए मिथाइल इथेनोएट का स्ट्रक्चर। कहाँ चले गए आप लोग? मुझे मिथाइल इथेनोएट का स्ट्रक्चर बताओ यार। कोई शांति में कोई मंत्रा चांट हो रहा है क्या? बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, मिथाइल इथेनोएट। हाँ धर्मबाजी बताओ फटाफट स्ट्रक्चर। हमें याद है लेकिन समझाऊं कैसे? समझाओ ऐसे कि बताओ कि इथेनोएट में कितने कार्बन है, मिथाइल में कितने, O8 क्या होता है ये बताओ। मैम 3 कितने? कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, 2 ऑक्सीजन होते हैं। हाँ तो फिर थर्ड वाले में कहाँ से हाइड्रोजन ज्यादा है यार? सो बताओ भाई क्या है, मैं बताऊं? आदित्य सक्सेना बता यार, दोस्तों भी बता। यहाँ पे ये तो एकदम शांत हो गए हैं, कनन धर्म और पवनदीप तो एकदम म्यूट मोड पे चले गए हैं। CH3COO शिवम खंडेलवाल, वेरी नाइस, क्या बात है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर अब आपने बिल्कुल सही बनाया है। धर्म पाजी एकदम बता चुके हैं सही कि भाई कार्बन होने चाहिए 3, हाइड्रोजन होने चाहिए 6 और ऑक्सीजन होने चाहिए 2, जो कि 1 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है, तीनों में ही है यार, है ना? तो आंसर ऑल ऑफ दीज हुआ ना, और क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज इंडीड ऑप्शन डी। ऑब्वियसली ना, मेरे को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है अब? काउंट कर लो, कार्बन पहले वाला में कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरे वाले में ईथर है और CHO। ये किसने कहा है कि भाई अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात हो तो एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। इट शुड हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप and should follow the same molecular formula. First thing first, the molecular formula has to be same, which is same in all the 3 cases. You can check. All of them has number of carbons same, number of hydrogens 6, number of carbons are 3, right? And number of oxygens are 2. तो क्या हुआ आंसर? डी हुआ ना बॉस। So look at this. Let's have the solution slide also once again. पढ़ लो यार, ये मैं बता चुकी हूँ, सब में सेम कार्बन्स थे, सब में सेम हाइड्रोजन्स थे, सब में सेम ऑक्सीजन्स थे, फंक्शनल ग्रुप सब में अलग थे। अगर किसी में ईथर और कुछ और है तो ठीक है, होने दो अगर फंक्शनल ग्रुप है, इससे की फर्क पैदा है? कोई फर्क नहीं पैदा भाई। गॉट इट? कूल, सिंपल, इजी। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा पता नहीं क्यों गलत किया, मुझे नहीं पता, आप ही बता सकते हो। हाँ कनन, तुमने भी, पवनदीप यू ऑल्सो टेल मी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक ज्यादा गिन लिया क्या? ये वाला गलत क्यों है यार? मैम पता नहीं कैसे गलत हुआ। हाँ पवनदीप, सेम आंसर एज कनन। तुमने सोचा, टाइम पूरा लिया मुझे लग रहा है। पवनदीप पूरा समय ले रहा था, बट
लगा कि कनन और धर्म सही होंगे, कर देते हैं। मेजॉरिटी मैम एक्स्ट्रा विंस। गिन दिया था। एक्स्ट्रा पता नहीं कहाँ से एक्स्ट्रा गिर गया ये वाला, तो यार मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। 2 मिनट लगेगा मुझे, तब तक स्कोरबोर्ड देखते हैं। So this is how the scoreboard is looking like. Kanan and Pavandeep are still on a tie. Dharam Paji is 1 short of 12, so which is very easily attainable. And I'm sure anything can happen with the next question. So let's see the next question on your screens now. Find the relation between the following compounds. Please observe the following compounds. And let me give you one thing before you bombard me with the answer, guys. There can be 2 answers correct. You have to give me the most appropriate one, because there is a twist here. Options are chain isomers, option B positional isomers, option C functional isomers, option D metamers. हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है जरा चैट में देखते हैं। बच्चा पार्टी क्या आंसर दे रही है मुझे। बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। अरे बाप रे बाप, काफी समय लिया। पिछले आई थिंक वेल लेसन लर्न्ड फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन पवनदीप, that majority might not always be correct, and it's always good to use your own mind. And let me tell you, that's applicable anywhere. कहीं भी जाओ ना यार, majority के साथ मत जाना, अपनी अकल लगाना। ठीक है पवनदीप, आप बताओ यार क्यों दिया ये बी के साथ? क्यों भाई? कनन और धर्म आपके दोस्त तो बी कह रहे हैं यार। मैम जो प्रायोरिटी होती है वो मेटामेरिज्म की ज्यादा होती है। FMCP, this is how I always make you remember. FMCP, functional पहले, फिर metamerism, फिर chain, फिर position. If in case there is a particular question which is a single correct question, an examiner wants you to find out one answer, then you prioritize. Yes, here indeed you guys, there is no doubt that you guys are correct, that it will show positional isomerism. Of course it will, क्योंकि एक में पहले दूसरे कार्बन पे CO है और एक में तीसरे कार्बन पे CO बॉन्ड है. So of course positional है आंसर, no deny to that. पर अगर आप देखो कार्बोनाइल तो लेफ्ट में और राइट में अलग अलग चेन्स है. नीचे वाले में भी कार्बोनाइल, द फंक्शनल ग्रुप इज सेम, आपका कीटोन ही फंक्शनल ग्रुप है, but the chains are different on the left and right, which is what metamerism. And if in case there is a particular isomer, there's a particular structure which is capable of showing both metamerism as well as positional isomerism, then FMCP. Functional होता तो functional priority लेता, functional group same था, meta है, जी हाँ. So Pavandeep, bang on boss. Indeed, D is absolutely right. Logic, FMCP. भूलना नहीं है, ये हमारा टेक अवे होना चाहिए. जनता लोग बहुत अच्छा आंसर दे रही थी. FMCP मुझे चैट में भी बहुत लोगों ने लिख दिया था. So great going guys. You guys are absolutely phenomenal. Please keep counting your score also, right? ताकि एंड में पता चले. ठीक है, जानवी ने लिख ही दिया FMCP. So don't forget now, FMCP. ठीक है, देख लो दोबारा यार, आंसर देख लो. लेट्स हैव द सॉल्यूशन स्लाइड वंस अगेन. पढ़ लो. MCQ क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट है. देखो अगर मल्टीपल करेक्ट होता तो स्टोरी अलग थी. हमने सीधा बोल दिया एक आंसर चाहिए हमें. तो इन दैट काइंड ऑफ अ टाई, M पहले आ रहा है, M will get the priority. Metamerism hence was your answer in this kind of a case where positional isomerism was also possible. Chill है, cool है. चले आगे. देख लेते हैं स्कोर पहले before we move to the next question. Let's see the scoreboard. So Pavandeep 16, Dharamji 10, Kanan 11. Okay, Kanan, you have an experience, so I'm sure that you'll make very good use of that experience. Let's see with next question how the scoreboard would change. Next question, guys, on your screens now.
Choose the increasing order of stability among the three main conformations, eclipsed, anti-gauche of 2-fluoroethanol. यही मजा है यार, स्वास्तिका लिख रही है, बाजी फिर पलट गई, बाजी एंड तक पलटेगी, तो यही मजा है रैपिड फायर मंडे का। ठीक है, बहुत ध्यान से दीजिएगा। 2-फ्लोरोइथेनॉल, स्पेसिफिक केस पूछ रहे हैं, जनरल नहीं पूछ रहे हैं आपसे, स्पेसिफिक पूछ रहे हैं। 2-फ्लोरोइथेनॉल। पवनदीप यार, हैशटैग स्पीड विद एक्यूरेसी, यही करना है। आप देखो, अगर अब तो खैर ऑनलाइन होता है, गोला मार दिया उसके बाद एग्जामिनर को ये नहीं बोल सकते मैम इरेजर है क्या, मुझे ये गोला इरेज करके दोबारा ए मार्क करना है। यही गेम है, माइंडफुलनेस का गेम है। सो मेंटेन योर माइंडफुलनेस। आई एम वेरी सॉरी यू चेंज्ड योर आंसर, बट देन कुछ कर नहीं सकते हैं बॉस। ठीक है, तो आंसर इज इंडीड गॉश, इसमें ज्यादा स्टेबल है। क्यों है कनन? मैम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, तो क्या वहां पे बनाने में क्या पता चलेगा, ऐसा क्या खास बात निकलेगी वहां पे? सिग्मा सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाती है। अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं बॉस, इतना डीप नहीं जाना है। कौन सा सिग्मा सिग्मा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल यार, चिल केस है। धर्म कम बोल रहा है बट काम की बात बोल रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल सही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की खास बात थी गॉश, दैट्स व्हाई विल हैव मोस्ट स्टेबिलिटी। होता जनरली एंटी है, ठीक है, इट शुड हैव बीन एंटी, बट because it's 2-fluoroethanol, A is absolutely right. So gauche, then anti, and then eclipsed. So A is the right answer. Let me show you the hydrogen bonding that Dharam was talking about. Let me show it right here for 2-fluoro. Look at this. There is 2-fluoro, and then what do we have? Ethanol, OH. There is a hydrogen directly attached to oxygen. There is a fluorine. Of course, electronegative elements like hydrogen attached with FON, fluorine, oxygen, nitrogen. Knock of hydrogen bonding should certainly happen. जो पता नहीं कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहे थे पवनदीप यार? सिग्मा सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार। तो इतना कॉम्प्लिकेट जीवन को नहीं करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर फॉर any of these kind of cases wherever conformers are asked and which has the possibility of this kind of an intramolecular hydrogen bonding, there gauche becomes extra stable. So otherwise it would have been anti-most if it was ethane or propane or butane. Any normal case would have been sabse zyada anti, then gauche, and then eclipsed, right? So let's see the scoreboard. Wonderful. So Kanan and Pavandeep are on a tie. Dharam is on 13. Anything can happen. It's rapid fire, like I have been saying since a long time. We have now a handful of questions which are left. So make sure you maintain hashtag speed with accuracy. That's very important. Okay? So speed maintain kariye, but speed without accuracy is very deadly. It can lead you to, of course, -1. That you cannot afford at this stage now. So next question, guys, on your screens now. The compound having molecular formula C4H10O can show metamerism, functional isomerism, positional isomerism, all of these. Bilkul sahi, Asta Gulati. Questions which will lead your base. Exactly, the questions that we have picked up are very basic ones, है ना? जब आप answer सुन भी रहे हैं, if you're doing it wrong also, the moment you hear the answer, you're like, यार ये गलत हो कैसे सकता था? मतलब इतना easy तो question था. So isomerism is a topic of very of enjoyment, of celebration, and very logical one.
So yes, in this case, like you have given a very logical answer. When you have oxygen, the moment you see oxygen, there can be alcohol possibility also. There can be ether possibility also. That's number one possible. Number two, when you have C4, 4 carbons, then chain isomerism is certainly possible. We had a question like this before. When we are talking about metamerism, the moment we talk about ether, the possibility of ether is there. We know that left and right chains can be different. So of course, there could have been functional isomerism, metamerism, positional isomerism. D is indeed the right answer. Everyone in the chat was also bombarding me with D. So boss, बहुत ही simple question था ये. So C4H10O, देख लो answer फटाफट. सभी ने ही सही दिया. I don't think so anybody has given in the chat also wrong answer. D was coming up. Amazing. ठीक है. आंसर देख लीजिए फटाफट फिर. ये वाला C4H10 सब कुछ दिखा सकता है, पोजिशनल भी दिखा सकता है, मेटा भी दिखा सकता है, फंक्शनल भी दिखा सकता है. So D was indeed right. Great. So we have, let's see the scoreboard. We have now a tie coming between Dharam and Pawan. Dharam hashtag bouncing back with the speed and accuracy. Now you've understood the importance of hashtag speed with accuracy, right? So Pawandeep and Dharam are on a tie, and Kanan, the lady out here, is leading the scoreboard. Let's see what happens with the next one. Take a deep breath in. Next question on your screen now. In the following skew conformation of ethane, H dash C C H double dash. Please observe it very carefully. H dash C C H double dash. Dihedral angle is 29 degree, 149 degree, 60 degree, or 120 degree. Very simple. भाई चैट में लिखा हुआ आ रहा है, आशीष सिंह लिख रहे हैं धर्म पाजी चक फट्टे. दोस्त बिठाया हुआ है धर्म अपना चैट में, पूरा चीयर हो रहा है यहाँ पे. We have lots of B also coming up and A भी आ रहा है. आनंद राज कश्यप is saying A, otherwise Soumyadeep, Anuj, Aakash, Sneha, everybody is saying B. तो क्या सोच के B दिया यार आप लोगों ने? यार मैं पूछती हूँ कुछ, आप लोग एकदम निर्वाणा मोड में चले जाते हो. आंसर बताओ यार, क्या सोच के आपने आंसर दिया है? ऐसा लग रहा है मैंने आंसर दिया है. 120 plus 29 डिग्री है. 120 को क्यों यार? क्योंकि दिख रहा है ना यार 120 का ये 360 को 3 में डिवाइड करो, वो दिख रहा है ना कि अच्छे से एक पिज्जा है अगर तो वो 3 में डिवाइड किया हुआ है प्रॉपर. आप उसको प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हो 3 पार्ट्स में, तो 360 डिवाइडेड बाय 3 इज 120. 120 थाई 29 डिग्री इतना बड़ा बड़ा दिखा हुआ है. पवनदीप यार तभी मैं H डबल डैश पे बहुत जोर दे रही थी यार. मैं H डबल डैश बार बार क्यों बोल रही थी? ताकि नीचे वाला H डबल डैश है वो मिस ना करो. अगर सिर्फ H डैश C C H पूछा होता तो पवनदीप आप जो कहते वो बिल्कुल सही होता. अभी जो कनन और धर्म ने बोला है वो बिल्कुल सही है. Indeed, the right answer to this question is option B, because like Dharam said, 120 plus 29 is going to give you 149. देख लो भाई. Answer on your next slide. Let's see. देख लो भाई, जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, जो 120 नहीं ऐड कर रहा है, तो पवनदीप H डबल डैश को मिस कर गए हो शायद आप, वरना कोई दिक्कत थी नहीं इस वाले सवाल में, है ना. क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, दिख ही रहा था. एंड डाइहेड्रल एंगल, इट्स जस्ट लाइक यू नो हाउ दैट थिंग हैपेंस इन टॉम एंड जेरी, है ना. 3D टॉम है हमारा, 2 प्लेट्स लिए, थाली ऐसी बजाई कि जेरी हमारा हो गया 2D में. तो 2D में इमेजिन करते हैं हम इस तरीके के 3D मॉलिक्यूल को. तो जब आप इसको देखेंगे डाइहेड्रल एंगल को,
आपको ये 29 सिंपल ऐड करना है 120 में, और 120 क्यों है ये मैंने आपको बता ही दिया. यू जस्ट हैव टू डिवाइड 360 by 3 because we are dividing it into 3 equal parts of a circle. It's a circle. We do not have to worry about sphere. Like I said, bang करके 2 प्लेटें हमने 2D मॉलिक्यूल बना दिया है. So chill pill question था. Let's see how the scoreboard looks like right now. Cool. So Kanan is on 22. That means the next question will play a very, very crucial role. Dharam is on 20 and Pavandeep is on 16. Ready for the next one? आस्था गुलाटी लिख रही है, हद है यार, क्या बाजी पलट रही है, एकदम अनप्रिडिक्टेबल. सच में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, और अभी तक अनप्रिडिक्टेबल है because you know the one who will give a quickest answer will get a +4 and the second one will get a +3, third one will get a +2. So now the game is about speed with accuracy. With that, next question on your screens now. Second last question. Ideally, the number of structural isomers of C4H14 is 3, 4, 5, or 6. So Singh Saab in the chat, how can we get the chance? Singh Saab, we roll out forms on Friday. Bhai, stay updated. Subscribe कर लो channel को so that the moment any notification comes, you are notified. वहाँ पे fill करो form and you will be here. ठीक है? So धर्म जी आंसर दे चुके हैं. कन्नन ने भी स्ट्रक्चर्स लग रहा है बना लिए हैं. Aditya Kumar is saying D in the chat. Mamod Sai is saying C. Joel is saying C. Nakul Chaurasya is saying C. Ashmita is saying C. All three of you have also said C. तो थोड़ा सा मदद कर दो यार, क्या क्या बनाया है? मैम एक तो 6 मेंबर्ड रिंग. ठीक है. मैम दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग, उसमें उसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी हम मिथाइल ग्रुप को अरेंज करने की. बिल्कुल सही, परफेक्ट, 3 हो गए. मैम फिर 4 मेंबर्ड रिंग, उसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी. क्या 2 क्या? मिथाइल को अरेंज करने की. एक तो हो गई मैम एक 2-3. हाँ, और एक या तो 3-3 या 2-2, मतलब वो एक ही काउंट होगा. बिल्कुल सही. और कोई? नो मैम. ये धर्म और पवनदीप कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बनाई? नो. तो भाई अगर इतनी अच्छी बनाई दी है तो बिल्कुल सही है. स्ट्रक्चरल आइसोमर C6H14. अरे यार ये रिंग कौन लिख रहा है? आशीष सिंह. यार रिंग कैसे पॉसिबल है C6H14 में? कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है? देखा क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लिया ना आप लोगों ने? एकदम हार्ड स्किप तो नहीं हुआ कि अरे यार कोई रिंग तो पॉसिबल नहीं थी? रिंग सच में पॉसिबल नहीं थी. सो यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट. Indeed, the right answer is what you guys have given. C is indeed absolutely right. Let me show you the structures very quickly. देख लो भाई, स्ट्रक्चर जो आपने बोला, जो कनन ने बहुत ब्यूटिफुली बताया, यही स्ट्रक्चर्स है. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है, इसलिए आशीष सिंह रिंग क्वेश्चन मार्क नो रिंग क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप. So degree of unsaturation was 0 here. That's why you can see here we have 1, 2, 3, 4, 5 possibilities, and the answer is very simple. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया अलग अलग तरीकों से. ठीक है, तो आंसर आप दे चुके हैं. स्कोर बोर्ड एक बारी देख लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. राइट, तो अगर हमारा टाई होता है, जस्ट इन केस, लेट मी टेल यू, हम करेंगे यहाँ पे टाई ब्रेकर क्वेश्चन के साथ टाई ब्रेक. सो लेट्स हैव द स्कोर बोर्ड इन फ्रंट ऑफ अस एंड लेट्स सी द स्कोर बोर्ड. So Kanan is leading it, 25. Dharam second, very close, very close, 24. Pavandeep 18, who is playing very smartly. But yes, there are few questions jahan pe #speed with accuracy has been a little dismantled. But let's see if he manages to
bring it a +4 and bring some twist to this whole scoreboard. Let's see the next question. Question number 15 on your screens now. Which of the following exhibits ring chain isomerism? Hexene and toluene, propyne and cyclopropene, hexene and cyclohexene, or is it option B, both B and C? मैं नहीं यार, मुझे अच्छा एंड पसंद है. आई डो नॉट लाइक बैड एंड्स. मुझे बताओ सी कैसे यार. हेक्सीन और साइक्लोहेक्सीन अपने आप में क्या साइक्लोहेक्सेन में एक अनसैचुरेशन नहीं है? साइक्लोहेक्सेन जो है एक तो रिंग का ही अनसैचुरेशन हो गया ना, और उसमें आप कह रहे हो एक और डबल बॉन्ड है. हाँ हाँ हाँ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सी क्यों, मुझे बताओ. जो फटाफट बोलेगा सही आंसर उसको हम दे देंगे +4. ऐसा नहीं होने वाला है, जो आपने दे दिया उसी पे ही देंगे, बट फटाफट मुझे सही आंसर बताओ. जस्ट ऑन द chat, turn your mute off and let me know the right answer. So समझ में आ गया बॉस? ये हेक्सीन और साइक्लो सी नहीं होगा. सी नहीं हो सकता. प्रोपाइन और साइक्लोप्रोपीन यहाँ सही है. प्रोपाइन है और साइक्लो है. सबसे पहले ए तो आउट ऑफ सीन है भाई. हेक्सीन दोनों ही आप रिंग की बात कर रहे हो, उसको तो देखना ही नहीं है, देखना पाप है. बी और सी में से ही हो सकता था आंसर. बी में प्रोपाइन है, साइक्लोप्रोपीन है, बिल्कुल सही बैठ रहा है. वहां पे भी अनसैचुरेशन 2 है, साइक्लोप्रोपीन में भी अनसैचुरेशन 2 है. वेयरएज हेक्सीन में अनसैचुरेशन 1 है, साइक्लोहेक्सीन में 2 है. तो मैं हाइड्रोजन भी काउंट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? आई नो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी. बी इज इंडीड करेक्ट. सो तीनों में से किसी ने सही आंसर नहीं दिया है. कनन कह रही है मेरे को क्या फर्क पड़ता है, फिर भी मैं जीत गई हूँ with a -1 also. Let's see the scoreboard. So here we have Kanan, who has been a part of Rapid Fire Monday previously. बच्चे कह रहे हैं यार हम एक बारी भी नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं. यहाँ पे कनन ने 2 बारी पार्टिसिपेट कर रही है. लास्ट टाइम रेडॉक्स में भी थी, and now this time with more experience, and this time of course leading the scoreboard also, because experience never goes waste. Hashtag proved. Right, but Dharam, let me tell you, क्या बढ़िया competition दिया यार. From the start, it was like lead था, उसके बाद competition आता रहा, और पवनदीप 1-2 चीजें इधर उधर थोड़ा सा speed के चक्कर में I think गलत हो गई. Otherwise, the score was very very close. So Pavandeep and Dharam, you well played, amazingly well. But yes, the star of the day, Kanan, winning the Rapid Fire Monday today with the score of 24. Brilliant, guys. So I'm sure you had fun, you had a good experience, and you had a learning experience, which is most important. Okay? So we'll wind up for today, for today's Rapid Fire Monday, which is on isomerism. Let me tell you, isomerism is one very important topic if you're planning to study for class 12th, or if you're planning to study hydrocarbons. You cannot proceed without the GOC topic isomerism. Hence, all of you guys in the chat who is giving wrong, like Tyagi is saying, Tyagi Tanishk is saying he got 14 out of 15 correct. If this is a score coming up, you guys are absolutely brilliant then. Wonderful. So keep enjoying studies. Find your own love in the studies. Like we're trying to make things creative for you and make you understand questions and concepts seamlessly with utmost creativity possible with such a session like a rapid fire. I'm sure it gives you the number one, dissipation of all the pressures around, because most important thing is
अगर आपको पेपर दे दिया जाए करने को सॉल्व, लेट्स से केमिस्ट्री का आपको 3 घंटे में करना, you will be able to do it. But the game is not just about the accuracy, it's about accuracy with speed. So that's what we teach you. We try to teach you in rapid fire. This was me, Nitika, signing off. Take a very good care of yourself, stay in the best of your spirits, and keep learning. Bye-bye. Cool. Congrats.